भिवंडी लोकसभा मतदारसंघामध्ये आहे। भिवंडी लोकसभा मतदारसंघामध्ये तुतारीच्या चिन्हावर सुरेश माते इथे काळामामा उभा आहे। इथे लोकमानस लोकांचा कौल यांचा कुणाकडे आहे हे आपण जाणून घेऊया। आज काळामामा फॉर्म भरणार उमेदवारीचा फॉर्म भरणार आहे आणि इथे सगळीकडे आपण बघितलं तर लोक जमली आहेत। त्यांना समर्थन देण्यासाठी लोक जमली। भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार सुरेश म्हाते उर्फ बाळ्यामामा यांनी भरला उमेदवारी अर्ज। भिवंडी सगळीकडे लोकसभा 2024चे वारे वाहू लागले। त्यात भिवंडी मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार सुरेश म्हाते उर्फ बाळ्यामामा यांनी जोरदार शक्ती प्रदर्शन करीत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला। यावेळी महाविकास आघाडीचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। भिवंडीत भाजपाची सत्ता असताना लोकोपयोगी कामे तसेच भिवंडी मतदारसंघाचा विकास झाला नाही, त्यामुळे महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार सुरेश म्हाते उर्फ बाळ्यामामा जर निवडून आले तर भिवंडीचा विकास हा मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो, हा विश्वास लोकांनी व्यक्त केला। भिवंडी का है, भिवंडी कला से। अच्छा, किसको अभी समर्थन देंगे? समर्थन इंडिया गठबंधन और वहाँ का विकास आघाड़ी के बालिया मामा पूरे भारतीय बालिया मामा कैंडिडेट है, उनका समर्थन हम लोग दे रहे हैं, उनके लिए आए। और आपको अभी पता है कि बालिया मामा अगर जीत के आएंगे तो भिवंडी का विकास होगा? विकास होगा, बहुत विकास होगा। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है बीजेपी सरकार में। अब बालिया मामा आए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरे भिवंडी का और पूरे हिंदुस्तान का विकास होगा। सर आप कहाँ से आए? भिवंडी किसको समर्थन करेंगे? अभी कर रहे हैं क्या पहले से ही कर रहे हैं? पहले से हम लोग साथ में। अच्छा, पहले से हम लोग हैं। आप क्या चाहते हैं कि बाला मामा अगर खासदार बनते आए तो क्या चाहते हैं उनसे? उनसे ये चाहते हैं कि पूरा विकास हो, पूरा भिवंडी शहर एकदम विकास से भर जाए। हाँ, कुठून आलात तुम्ही? आम्ही कामतगर आशीर्वाद नगर। अच्छा, आज काय विशेष म्हणजे कुणाचं प्रतिनिधित्व करता किंवा रॅलीमध्ये कुणाचे आलेत? आम्ही बाळ्यामामा, ओनली बाळ्यामामा। काय वाटतं, बाळ्यामामा जिंकून यावं असं वाटतंय का? यावंच का, तर आता या म्हणजे याच्यामध्ये आता एक नवीन नेता पाहिजे, जरूरी है। ये बोले हमको जो है बालिया मामा को जिताना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। तो भी बीजेपी से 10 साल में हम लोग सिर्फ बूढ़ा युग में विकास हुई है और राशन का लोगों को धंधा दे करके सिर्फ देश को बर्बाद किए है। और हमको देश का विकास करना है ताकि हमारा देश उन्नति जाए, लोगों को रोजगार, शिक्षा मिले, नौकरी मिले, यही मेरा आह्वान है।